बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पार्लिमान से मंजूर बिल में तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। कौमी असम्बली से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब कोई मुश्तरका इजलास और बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं, अब सिर्फ JUI का नहीं तंजीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ है कि एक्ट बन चुका है, गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर कानून में तब्दीली की गई तो मामला ऐवान में नहीं मैदान में जाएगा। पहले हमने अपना जमात का मौक़िफ़ दिया था, अब तमाम तर तंज़ीमात मदारिस दिए ने रात को मीटिंग करके एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि ये एक्ट है और हम इसको एक्ट तस्लीम करते हैं और नोटिफिकेशन का मुतालबा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और अमेंडेड जो है वहाँ से कोई अमेंडेड हम कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा जो तय हुआ है हम उसी बात को एम्फसाइज़ कर रहे हैं, इस पर ज़ोर देना चाहते हैं और हर कीमत पर इसको हल करना चाहते हैं। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसला हो। आप बैंक अकाउंट न खोलें हमारे, इंशाअल्लाह पैसे आएंगे, लेकिन खुदा के लिए खलाई मदारस के लिए हमारे हकीकी मदारस के निज़ाम को बर्बाद न कीजिए। नदीर तारा साहब जो हैं इस बारे में बड़े मुश्ताक हैं, कोई ना कोई तावील अब बनाकर पेश कर देंगे, सो ये तावीलें नहीं चलेंगी। अब हम भी इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं, मैंने भी इसी मदरसे इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। माशाअल्लाह आप मुझसे जूनियर हैं, आप कानून पढ़े हुए हैं, लेकिन आप पढ़े हुए हैं, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फलां फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी और उनकी रजामंदी से वाबस्ता होंगी। क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं हैं? और अगर आज़ाद नहीं है तो कह दिया जाए कि हम वाक़अतन ग़ुलाम हैं, फिर हम जाने और ग़ुलामी जाने किस तरह पाकिस्तान पर आप ग़ुलामी मुसल्लत करते हैं। अगर अमेरिका के कांग्रेस में या वहाँ के किसी ऐवान में एक मेंबर करारदाद पेश करता है और वो करारदाद या इमरान खान की रिहाई के लिए है या PTI के हक़ में जाता है, तो आप यहाँ करारदाद पास करते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में दखल देने का हक़ हासिल नहीं है। ये पाकिस्तान के मामलात में दखल देना, इसका ताल्लुक़ सिर्फ इमरान खान और PTI के साथ है, क्या हमारे इस आईन और पार्लियामेंट के साथ नहीं है? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का एहतराम है, इनकी बात सर आंखों पर, मगर बिल के खुद ब खुद एक्ट बनने का उसूल बिल के पार्लियामान से दूसरी बार ऐवान सदर जाने की सूरत में है। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान के खिताब का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े भी हैं, उनसे एहतराम का बड़ा रिश्ता है, ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी क़यादत का भी। आपने मौलाना जो बातें की सर तस्लीम खाम, आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। आइन का आर्टिकल 75 का पार्ट 2 ये कहता है कि जब सदर साहब बिल रिटर्न कर देंगे मजलिस शूरा को, तो फिर इट शैल बी रिकन्सिडर्ड बाय मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन अ जॉइंट सिटिंग। सर वो स्पीकर चेंबर में, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है, तो वो उसको जॉइंट सिटिंग में रख देंगे और जॉइंट सिटिंग मौके पे मौजूद जो मेजॉरिटी है उसके मुताबिक उस बिल को पास कर देगी। जब मुश्तरका इजलास उस बिल को पास कर दे अमेंडमेंट्स के साथ या विदाउट अमेंडमेंट्स, तो फिर वो वापस अरसाल हो जाता है सदर मुमलिकत को। यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है, उस सूरत में सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है और वो 10 दिन के अंदर अंदर उसको या असेंट कर देंगे, 11वें दिन वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा उस डीमिंग क्लॉज की वजह से, जिस पे हम कहते हैं द लॉ हैज़ डीम टू बीन पास्ड। स्पीकर साहब आप बड़े तजुर्बाकार शख्स हैं, तो हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाज़िर हैं। अगर कानूनी तौर पे ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आंखों पे, लेकिन क्योंकि ये आइन के तहत लेजिस्लेशन होती है, इन पे चैलेंजेस भी आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लिया जाए।
وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس سے رابطہ کریں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ انہیں یقین حکومت کی جانب سے سیاسی مذاکرات پر مثبت جواب آئے گا۔ رانا ثناءاللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد ہنگامے میں وردی والوں اور بغیر وردی والوں دونوں کی جانیں گئیں، مگر دونوں جانب سے اظہار افسوس کرنے میں اجتناب کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ خواہ کسی نے وردی پہنی تھی یا وہ وردی کے بغیر تھا، اگر 24 نومبر سے لے کے 26 نومبر تک اس ہنگامے کی نظر وہ ہوا اور اس کی جان گئی ہے تو بالکل دونوں اطراف جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور افسوس یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دونوں طرف اجتناب جو ہے وہ برتا گیا ہے۔ اگر وہ مروت صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کی، تو بات شاید اس طرف سے بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اسپیکر کا آفس جو ہے وہ ایک غیر جانبدار آفس ہے، تو میں یہ مروت صاحب سے یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو آپ کی کمیٹی ہے آپ ان سے جا کے یہ کہیں کہ جی یہ کمیٹی ہے اور ہم اس میں سیریس ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل بات پولیٹیکل ڈائلاگ کی ہے، تو مجھے یہ یقین ہے اور ہم اس بات کی کوشش بھی کریں گے، خواجہ صاحب کو بھی ساتھ لیں گے اور ہم اسپیکر صاحب سے یہ کہیں گے کہ وہ یہ معاملہ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ڈسکس کریں، گورنمنٹ سے ڈسکس کریں، الائیز پارٹی سے ڈسکس کریں۔ رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ کل خواجہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو پہل کرنا پڑے گی، کیا رانا ثناءاللہ حکومت کے باضابطہ موقف سے ہمیں آگاہ کریں گے؟ ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے کئی سوتنیں آپس میں لڑ رہی ہے، ہر وقت تانے، ہر وقت تنقید، میڈیا روز کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں سے کبھی بات آتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہماری طرف سے بھی کہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں۔ عموماً میری ذاتی رائے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے قوم کے ساتھ، کوئی بھی مذاکرات تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ٹی او آرز ڈسکس ہی نہ کریں اور ان ٹی او آرز کو لے کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں۔ لیکن پوری قوم کی نظریں اس ایوان کی طرف ہیں، یعنی فرشتے تو نہیں آئیں گے ہمارے بیچ بات کرنے کے لیے۔ رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں، کیا ممکن ہے میرے نون کے دوستوں آپ کے لیے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں، بیٹھ جائیں، اتنے بڑے لوگ سیاسی، خواجہ آصف صاحب موجود ہیں اور بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار قاہرہ میں G8 سمٹ سے خطاب کر رہے ہیں۔ As the global economic center of gravity shifts, it is essential that we seize the moment of opportunity to ensure inclusive regional transformation. Pakistan values Sikha's role in promoting cooperation and advancing peace, stability, and security in Asia. As we gather today, we are reminded of Asia's vast potential and the challenges that hinder our shared goals. Excellencies, we must strengthen political ties, pool economic resources, and ensure growth benefits reach all corners of our continent. However, lasting progress cannot be achieved in isolation. Persistent challenges, including political disputes, conflicts, foreign occupations, and the denial of self-determination, along with poverty, illiteracy, and climate change, undermine the collective development of Asia. Excellencies, sustainable peace and security can only be achieved by addressing the root causes of conflict. This requires inclusive political solutions based on dialogue, mutual respect,
and adherence to the international law. In this context, a just resolution of the Palestine and Jammu and Kashmir issues, guaranteeing their right to self-determination, is key to fostering lasting peace and stability in the region. Regional frameworks like CICA play an indispensable role in advancing confidence building, preventing diplomacy, and conflict resolution. Pakistan is a strong proponent of CICA's core principles, particularly its commitment to the peaceful settlement of disputes, respect for territorial integrity, and the non-use of force. We call on all member states to continue utilizing this platform for dialogue and cooperation. Excellencies, Pakistan fully supports CICA's vision of advancing economic cooperation and regional connectivity. Investment in infrastructure, particularly transport and energy corridors, is crucial for integration and sustainable development. We are committed to enhancing connectivity through CICA and other regional frameworks. Initiatives like the Belt and Road Initiative, China-Pakistan Economic Corridor, and the International North-South Transport Corridor highlight the transformative potential of such projects. Excellencies, it is important to view these initiatives not through narrow political lenses, but as opportunities for shared growth. By strengthening collective connectivity, we can build an economically integrated and interconnected Asia for the benefit of all living in Asia. Pakistan is equally committed to fostering people-to-people ties and promoting cultural exchanges under CICA's framework. Mutual understanding and respect will lay the foundation for lasting cooperation, transcending borders, and enriching our societies. Excellencies, Pakistan fully supports strengthening CICA's institutions. Pakistan recently ratified the Convention on the Privileges and Immunities of the Secretariat and have established links between Pakistan's key research institutions and CICA's think tank forum. These steps reflect our dedication in supporting CICA's initiatives and promoting deeper regional cooperation. As a newly elected member of the UN Security Council for 2025-2026, Pakistan looks forward to collaborating with UN member states and regional organizations like CICA. We are committed to advancing the UN Charter's vision, which is preventing conflicts, fostering prosperity, and promoting human rights. We also support greater cooperation between the UN Security Council and the regional bodies to enhance global and regional peace efforts. Excellencies, the challenges we face today demand collective action, shared responsibility, and unwavering commitment. We are optimistic that under Azerbaijan's leadership and guided by our collective Asian spirit, the CICA will continue to grow stronger, making Asia a bastion of peace and prosperity. I thank you all. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सीका के वज़ारती इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे हैं।